Hello, everyone. Welcome to your own channel, The English Linguist. Uh, Friends, since this is our first video, in this introductory video, we are going to talk about the scope and the kind of approach that we are going to adopt to study English. इस चैनल का स्कोप ये है कि anybody who goes to school, college, university, or is preparing for any competitive exam can use this channel to his advantage to learn the language. तो आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो सकते हैं, या आपको अपने प्रोफेशन में नीड फील हो रही है कि आपको आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, और मे बी यू इवन वांट टू इम्प्रेस समबडी. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर यू टू बी लर्निंग द लैंग्वेज. तो जितने भी लोग लैंग्वेज को जिस किसी वजह से भी सीखना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम टू दिस चैनल. सो इस चैनल को कई तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं. सिंस दिस चैनल इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू द फॉरेन स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज एंड नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज. तो इंग्लिश के फॉरेन स्पीकर्स हैं वो कौन हैं? वो सब लोग जो बचपन से इंग्लिश नहीं बोलते आ रहे हैं. दे आर द फॉरेन स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज. द नेटिव स्पीकर्स आर जो बचपन से बड़े होते तक जिनके इर्द गिर्द ये भाषा बोली गई हो, पैदा होने से लेकर बड़े होते तक इस लैंग्वेज में पले बड़े हों. जस्ट लाइक इंडियंस आर बॉर्न विद अ सर्टन लैंग्वेज बीइंग स्पोकन अराउंड देम, लाइक हिंदी, पंजाबी, तमिल, कुड बी एनी लैंग्वेज. So now the point is कि नेटिव और फॉरेन स्पीकर्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि नेटिव स्पीकर को अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वेयर एज अ फॉरेन स्पीकर नीड्स टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. और वो ट्रांसलेशन करने के लिए उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, अदरवाइज द पर्सन माइट नॉट बी एबल टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन कर पाने के लिए ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशंस पता होने ज़रूरी हैं. नाउ हाउ डज अ नेटिव स्पीक? इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, क्योंकि अगर हमें ये प्रोसेस अच्छे से नहीं समझ में आता है, नहीं पता होता है, तो हम ग्रामर को उतनी इम्पोर्टेंस दे नहीं पाएंगे जितनी उसको हमें देनी चाहिए. और अगर हम उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो हम उसको उतनी डेडिकेशन से पढ़ भी नहीं पाएंगे. सो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट एज फॉरेन स्पीकर्स व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट वी हैव टू अंडरगो. सो होता क्या है कि जो भी इंसान की मदर टंग जो भी होती है, वो जब बड़ा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, बड़ा होने लगता है, तो वो अपने इर्द गिर्द अपने माता पिता को और लोगों को भी वही लैंग्वेज यूज़ करते हुए देखता है, सुनता है, और धीरे धीरे उनकी नकल करके वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है. तो वो लैंग्वेज इसको बोलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन या ट्रांसलेशन की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि उसने नकल करके सीखी है वो लैंग्वेज. उसको सही गलत का आभास इतना अच्छे से नकल करके हो जाता है कि लैंग्वेज के रूल्स उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं. वेयर एज फॉरेन स्पीकर्स, उनके पास भी दो रास्ते हैं. एक रास्ता तो ये है कि वो अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस करें कुछ समय के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेलिजेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल. 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल वो अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस करें जहाँ एक सर्टन लैंग्वेज बोली जाती है. इट कैन बी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज फॉर दैट मैटर. इट कैन बी लैटिन, इट कैन बी ग्रीक, इट कैन बी एनी लैंग्वेज. सो द पर्सन हैज़ टू प्लेस हिमसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट वेयर दैट अ सर्टन लैंग्वेज इज स्पोकन, और फिर नकल करके धीरे धीरे सीख के वो उस लैंग्वेज को सही से बोलने लगेगा. द सेकेंड प्रोसेस इज which we are going to adopt is the process of translation. Now, ये process of translation ये होता कैसे है? As foreign speakers हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में
जो भी हमको इंग्लिश में बोलना है उसको सोचते हैं मदर लैंग्वेज में, हिंदी में फॉर एग्जांपल, एंड देन हम उस अपने रूल्स अप्लाई करते हैं, एंड देन वी ट्रांसलेट इट एंड स्पीक इट. So a beginner might take a lot of time to translate, applying the rules, and it might take a lot of time for a beginner to do that. But हमारी कोशिश ये है कि हमारा टारगेट ये है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लें ट्रांसलेशन की, ग्रामर, वोकेबलरी, टेंसेस, इन सब को इतना मास्टर कर लें, इस हद तक मास्टर कर लें कि ये जो this process of translation and the time taken by this process of translation gets completely eliminated. ये time खत्म हो जाए. And we are able to reach a stage where this process either happens in a split second or in a nanosecond, or it doesn't happen at all. We need to reach a stage where we even start thinking in English. That is our target. We have to master the language so much that we know it like the back of our hand. तो हमको उस स्टेज तक पहुंचना है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा टारगेट है. एंड अब आते हैं कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अप्रोच क्या यूज़ करेंगे. तो हमारी अप्रोच होगी, वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, सब कुछ मिलाती है. तो वो क्या होगा? So we are going to master grammar and tenses. We are going to work a great deal on grammar and tenses. And then at the same time, we are going to enrich our vocabulary. What is vocabulary? Shabd, the words. The more words we have in our kitty, the better. जितने words हमारे पास होंगे उतना अच्छा हमारे लिए. एक बात और, what I personally feel is that your grasp over the language is tested a great deal by how you pronounce your words. All these words coming together form a beautiful sentence. And when a sentence pours out of your mouth, it says a great deal about the amount of hard work that you've put into the language. So pronunciation पे हम उतना ही ध्यान देंगे जितना कि grammar, vocabulary पर देंगे. Now, the last thing but not the least, हमें अपने आप को expose करना है correct English को. This is very important, friends. Exposure to English language is very, very important. It can be, we can read a lot, we can listen to podcasts, but it's important that you expose yourself to correct English. It doesn't have to be, and one more thing I want to point out here, which is that हमको एक्सेंट के पीछे नहीं भागना है. some people are grammatically incorrect होंगे, but then they want to sound like they're British or they want to sound like they're Americans. No, तो हमको एक्सेंट के पीछे नहीं भागना है. We just have to focus on correct English, right? We have to be able to pronounce correctly. Our grammar has to be in place. तो ये चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए. एक्सेंट से हमें कुछ, we don't have to sound like what we are not. तो हमको, we are better off being Indians only. तो हमको British बनने की ज़रूरत नहीं है. तो exposure to good English is what is needed. और वो कैसे मिलेगा? You can watch English movies with subtitles. तो but the point here is that you are sitting there with an academic purpose. You have to sit down with a pen and a paper. This is what I used to do, and it helped me a great deal to learn this language. आपको, suppose you are watching an English movie and you're watching it with subtitles. So what you have to do is you have to sit with a pen and a paper. Wherever you come upon a good word or you come upon a good expression or a good sentence, you have to pause it, you have to note it down. And you can use it in your language. You can, if there's some such word, जिसका meaning आपको नहीं पता है, तो you can find it out, you can note it down, and later on you can use the word or the expression or the language or the word, whatever be it. You have to read a lot of books. Reading books is one of the most important aspects of learning this language. You can listen to podcasts, you can talk to your friends who you think are good at the language.
So there can be a lot of ways to expose yourself to this language. You have to pick them out. I have suggested a few here. You can pick out the rest. And so now the thing is grammar, tenses, vocabulary, pronunciation, and a lot of exposure to the language. And then we have to try to speak a lot. We have to focus on speaking. We have to make sure that every day we speak a great deal. If you can find somebody to talk to, good. If not, keep talking to yourself. Stand in front of the mirror if it helps. Otherwise, you can just you can lie down, you can sit down, and just keep talking to yourself. Try speaking in English. You have to read a lot. Pick out a genre that you think you might find interesting. Read a book on that. Write. Try writing as much as you can. See, writing and speaking. What is the fundamental difference between writing and speaking? Now, एक फ़र्क ये है राइटिंग और स्पीकिंग में कि राइटिंग आपको ब्रीदर देता है. इट गिव्स यू टाइम टू थिंक. जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको सोचने का टाइम नहीं होता. आपको यू जस्ट हैव टू से व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, राइट. Another thing is listen to people. You can listen to good podcasts. You can Google and find out the apps that have a lot of podcasts, good podcasts. तो उससे दो फायदे होंगे. आप कुछ अच्छा पढ़ भी पाएंगे, सुन पाएंगे, or you can also at the same time work on your language, right? So all these things put together, and after we have practiced all these things a great deal, we will reach a stage where we are the masters of the language. We will have by then acquired a certain level of mastery on the language. But then friends, there's one thing I want to point out here, कि कुछ लोग बोलते हैं इतनी देर में अंग्रेज़ी बोलना सीखिए, 30 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखिए. हाँ, 30 दिन में आप कुछ ना कुछ तो बोल ही पाएंगे. But we are over here targeting a stage where we don't really have to come out with the learnt English, the rote learnt English, कि जो हमने याद किया है वो हमें सिर्फ वहीं तक हम सीमित ना रहें. We have to reach a stage where whatever we want to say, we can say it without having to, worry about it, without having to think about it. So that's the stage where we want to reach. That's our target. So I hope this journey that you and I we've started together, we are able to go down this lane happily, and hopefully I'll be able to teach you a thing or two about the language. Thank you for staying with me. If you are with me on this journey, let's stay together. Subscribe to my channel and follow me on other social media platforms also. Yeah, in time to come, I'll let you know what social platforms I'm present on, and I'll see you again with our first lecture. Thank you.